Welcome back from the break. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on NewsX with the National Capital's Air Quality Index at 286. The overall air quality in Delhi continues to remain in the poor category for the third day straight this morning, according to Air Quality and Weather Forecasting and Research India. As stubble burning continues in parts of Punjab and Haryana, air quality in the national capital has worsened in the past few days, according to the Indian Agricultural Research Institute Punjab, which accounts for the maximum number of cases of stubble burning every year, reported 49,922 farm fires in 2022 compared to 71,304 the previous year and 83,002 in 2020. Haryana recorded 3,661 farm fires in 2022, down from 6,987 in 2021 and 4,202 in 2020. Well, let's quickly take you through the parali burning incidents in Haryana and Punjab over the past few days. Well, let's quickly, okay, I think we have some technical trouble there with that graphic. We will get it for you in just a second, but let's also quickly introduce a special guest who is joining us live now. Gopal Rai, Environment Minister of Delhi, joins us live on the broadcast. Gopal Rai, thank you very much for speaking with NewsX. What is the Punjab government saying, sir, about the issue of stubble burning? देखिए, अभी तक जो पराली जलने की घटनाएं हैं पंजाब की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार पिछले साल की तुलना में अभी तक तो पराली जलने की जो संख्या है काफ़ी कम है और हमें उम्मीद है जो आंकड़े आए थे पिछले साल अब तक जो है वो जो पराली जलने की घटनाएं थीं और इस साल जो घटनाएं हैं उनमें काफ़ी कमी आई है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही कमी जो है अगले 15 दिन भी बनी रहेगी क्योंकि अगला 15 दिन काफ़ी क्रूशियल है। But what about the Delhi government, sir? Have they received data on the pollution sources in the national capital? देखिए, जो चूँकि अभी ये अक्टूबर में रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट स्टडी को एक अधिकारी की जिद पे बंद कर दिया गया। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से नया कानून दिल्ली के लोगों के ऊपर थोपा है उसका ये सबसे जीता जागता उदाहरण है। कैबिनेट निर्णय लेती है कि हमें रियल टाइम सोर्स स्टडी करानी है और एक अधिकारी उसको बंद कर देता है, लेकिन इसके पहले हमने ख़ास तौर से अलग अलग जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर रियल टाइम सोर्स स्टडी का बैन लगाया था और उसके एनएलसी के आधार पर जो हमने विंटर एक्शन प्लान तैयार किया वो हमें सहयोग कर रहा है और उसके आधार पर जो है हम दिल्ली के अंदर जो विंटर एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने पे फोकस कर रहे हैं। Yes, what about the Delhi government though, Gopal Rai? Do you have sufficient data to reduce pollution? नहीं, ये तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि दिल्ली के अंदर डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी ने जो है वो आईआईटी कानपुर को पेमेंट बिना कैबिनेट के सूचना के भी निर्णय के ही बंद कर दिया और उसकी वजह से जो है वो डाटा नहीं मिल पा रहा है। जी, अब आप आपकी सरकार के बारे में बात करें तो आपकी सरकार, गोपाल राय जी कह रही है कि अफसर जो हैं वो सरकार की बात मान नहीं रहे हैं। क्या राजनीति छिड़ गई है इस मुद्दे पे भी? क्या दिल्ली के लोग अब राजनीति का शिकार होंगे इस मुद्दे पे भी? नहीं, देखिए, इसके लिए तो जिम्मेदार केंद्र की भाजपा सरकार है। उन्होंने जिस तरह का कानून दिल्ली के ऊपर थोपा उस कानून का तो परिणाम होना ही था कि इस तरह की जो है मनमानी शुरू होनी थी और उसका मूर्त रूप आज दिल्ली देख रही है। लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं। उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा प्रयास है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के प्रदूषण को नियंत्रित करने पे काम किया जाए। मगर जैसे आप कह रहे थे अभी कि डेटा तो है नहीं, तो डेटा के एब्सेंस में सरकार कैसे प्रदूषण का सामना करेगी? नहीं, हॉट स्पॉट के लिए तो हमने पहले हर हॉट स्पॉट को मॉनिटर करके और वहाँ के लिए तो एक्शन प्लान हमने ग्राउंड सर्वे से वहाँ के लिए तैयार पहले ही कर लिया था और उसके आधार पर हमारी जो टीमें हैं हॉट स्पॉट्स की जो विंटर एक्शन प्लान बना हुआ है, हर हॉट स्पॉट्स का अलग अलग बना हुआ है, उस पर फोकस तरीके से काम किया जा रहा है। डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन के माध्यम से काम किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसके लिए जो है ये जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो विंटर एक्शन प्लान डिजाइन किया था उस पर हम काम करें
निश्चित रूप से अगर रियल टाइम सोर्स हमें अपॉर्चुनिटी स्टडी से अगर डाटा मिलता तो हमें त्वरित आज की तारीख में हमें क्या करने की जरूरत है वो निर्णय लेने में हमें आसानी होती। जी, अब अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक राजधानी में दिन ब दिन और बदतर हो रही है ट्रैफिक की स्थिति। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो है, बसें हैं, मगर फिर भी इतना ट्रैफिक रहता है सड़कों पे, इतने लोग अपनी खुद की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, खुद के मोबाइल्स, खुद के स्कूटर्स पे चलते हैं। इस मुद्दे को लेकर सरकार का एक्शन प्लान क्या है? देखिए, ट्रैफिक का कंट्रोल जो है वो ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से होता है। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने अलग अलग जगहों पर जो मेजर कंजेशन पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और वहाँ पर टीमें ग्राउंड पे उतारने का और उसको नियंत्रित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जिससे कि हम लोग कंजेशन से बच सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा गोपाल राय जी, दिल्ली सरकार ने सारी जो बसें हैं दिल्ली में वो पूरी तरह से आप इलेक्ट्रिक अब तक क्यों नहीं कर पाए? नहीं, उसको चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर आज ये चैलेंज नहीं है। दिल्ली में सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर का प्रदूषण होता है, दिल्ली के बाहर का प्रदूषण होता है। दिल्ली के अंदर तो सारी जो बसें हैं वो सीएनजी पे चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम दिल्ली के चारों तरफ जो है भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली में तो सीएनजी की जगह 800 नई इलेक्ट्रिक बस आ गई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर आज तक एनसीआर के रेंज में भी एक सीएनजी की बस और इलेक्ट्रिक की बस नहीं चला पाई। मेरा निवेदन यह है कि ये जो बेवजह डीजल फूंका जा रहा है चारों तरफ दिल्ली के, इस पर तुरंत रोक लगाया जाए। मुझे लगता है कि उससे दिल्ली को काफी राहत मिलेगी। गोपाल राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे संग जुड़े, आपने इस मुद्दे पे सरकार का पक्ष रखा। लेट्स ऑल्सो नाउ क्विकली bring our viewers up to speed with certain data that has emerged on this issue. What does that data signify and what is that data really showing us? Let's quickly tell our viewers about the situation on Parali burning incidents so far which have been reported from Punjab. So here is the picture that is emanated from Punjab. So in 2020 you can see that the number of Parali burning incidents was 76,550. Now, thankfully, there has been a slight reduction that we've seen from 2020 to 2021, although that reduction was marginal, not amounting to much. It reduced from 76,550 in 2020 to 71,304 in 2021. If we talk about 2022, well, it halved. So we saw 37,303 incidents only being reported in 2022. And now if we talk about the situation that exists till 20th October, the number of incidents of Parali burning, stubble burning is 9,354. So will it be lesser than the number of 2022 or not is something we'll be keeping a close eye on. But the reassuring news is that obviously Parali burning is now reducing in Punjab. Let's show you now the situation in Haryana. So in Haryana, the numbers actually increased from 2020 to 2021. In 2020, 18,515 incidents were reported, of course much lesser than Punjab, but still high. It increased to 22,881. So instead of decreasing, it increased from 2020 to 21. But 21 to 22 saw a reduction quite significantly from 22,881 in 2021 to 11,598 in to 2022. And if we talk about 2023, well, the situation stands currently till the 20th of October at 1,459 incidents that have been reported so far in Haryana. So those of course are the figures that we are showing you of stubble burning in Punjab and Haryana. Let's quickly bring in our guest perspective as well on this big story. Dr. Ishwar Gilada, a health expert, joins us live. Dr. Gilada, we are seeing a gradual decrease in stubble burning. Do you believe this is good news, sir? And will this help the overall AQI index? See, Uday, very nice to see there is a reduction. But I would like to still see
how many people are prosecuted out of those 76,000 or 19,000. I have been demanding that the stubble burning should be made a non-bailable offense, whosoever it may be, whichever party that person is belonging to. Let us not bring in party politics in this. Anybody who is for his convenience, making inconvenience to others, that person has to be booked. Secondly, this is we have to have a collectivism and collective action at individual level, at social level, at governmental level. And because it is a multi-pronged problem, it is not only stubble burning, it is vehicular pollution, it is individual pollution, it is crackers, it is weather. So barring weather, all the other things are man-made. If we look at how it has impacted our lives, India has done a very good thing in health care. From 32 years of average age in 1947 when we got independence, we have come to 71. 71 for male and 73 for female. But we are still 10 years ahead, 10 years behind other countries. And we are not going to 81 or 82 years as many other countries. So on one hand, we say that India should be part of G7 countries. So if you look at all G7 countries, their average age at birth is 83, 82 years. And India is 10 years behind. Major contribution from that is a man-made calamities, which are like pollution. So you see why now people are going back from urban area to rural areas, because they see that in urban area there is a choking. So we need to do something very much collectively. We need to have iron hand to work at. We need to see that there is no cracker. We need to see that there is no stubble burning. Now, how difficult or easy it is to catch? I think it's very easy to catch them who are doing. We have a satellite, we have a drone we can deploy. We know where it is going to happen. There are officers, panchayat level. So before stubble burning, they should have some kind of NOC from local panchayat. Or what government need to do is that bring something in place. That okay, you want a crop, you take away your crop. It's a government duty to take away stubble. When government duty, government will not give any pie to those farmers. Government will make use of that stubble for any kind of furnace, making kind of briquettes or pellets. And all the farmers are saying that we need to do all these things in 2 to 3 weeks. Yes, government can do that in 2 to 3 weeks, provided they have a plan of action in hand. And then farmers cannot say that stubble belongs to us, you pay something. No, you cannot get anything. You already taken away your crop. So here you want all the good effects of that crop and all bad effects you want to pollute the air. I think there's something which are lacking is action. And I haven't seen any kind of that iron-handed action anywhere in the country, whichever the government is, Punjab or Haryana or anywhere. And lastly, now Diwali is forthcoming. We should see that zero cracker. And therefore I said there has to be a collective action. There has to be individual, social and governmental. We always cannot bring in government and put emphasis on government for officers or collector or SP. What individually we are doing? If we want our life to be extended by 10 years, I think everybody has to contribute. And in that sense, we are lagging behind. I think we need to do a lot of awareness right from the children age, because now first sufferers will be children. First sufferers will be those which are already having respiratory problem. Those people which are in the big cities like Delhi or Mumbai. Earlier we used to always see Delhi is a kind of polluting city. But now we see in Mumbai for last 8 days, 10 days, 15 days, such a haze. And AQI is as good as bad as Delhi, sometimes worse than Delhi. So I think whether it is a Lucknow or Kanpur or Delhi or Mumbai, all urban areas are the same. And we always try to pinpoint something. We take a tokenism action. We take action against PUC, pollution under control, those which are violating, but we are not taking action against those which are doing a major pollution. So I think we need to do that. Mumbai also has done stop all construction. I don't think that is also solution. Stop construction means who will be at sufferers? Those which are construction laborers. What they will do? The builders will not pay them. They will sit idle. So you are either killing them as hungry or you are killing them with pollution. These are not the solution. These are all knee-jerkism or tokenism. We need to have an iron-handed action and we need to decide
What is that factor which is last straw on the camel's back? Why this is AQI is going such a bad thing? Right. Also, what are the factors that contribute to pollution? Is it firecrackers? Is it stubble burning? Is it vehicular pollution? Is it industry smoke? Because there is confusion about what is the major factor and source of the deterioration of AQI in cities like Delhi and Mumbai around this time. First and foremost is the weather, which is not in our hand, and that always happens during the winter. But then there are all the factors: vehicular pollution, individual pollution, cooking pollution, people smoking and they kind of polluting the air, crackers, stubble burning, everything. So we do not know the breakup. How much is 30%, 20%, 10%? Like in Delhi, you have all the vehicles which are now green vehicles. So despite that, there is still pollution. That means there are other factors, and therefore I said it's a multifactorial problem. It needs multi-sector collaboration. And this time, at least, good thing that we started all this kind of awareness 1 month before stubble burning is happening. Whatever figures we are showing for stubble burning for this year, they are because it is crop is yet to come. Crop will start coming from next week or after 2 or 3 weeks. So I think we have started taking cognizance earlier, but I haven't seen that stubble burning is made a non-bailable offence, the cognizable offence. We have to do that. Farmer welfare is important, but farmer welfare cannot be at the cost of the anti-welfare of all over the people, all over the country. So if you want your welfare, actually it is also harming them. It is not that the stubble burning doesn't harm the farmers, but they want to have a shortcut. All right. Well, let's quickly now, thank you for your time, Ishwar Gilada, and your perspective on this big story, and quickly now go across to more ground reports coming in. My colleague Pia Man has filed this report from Sonipat, Haryana, where she is delving into this very problem and also introducing us to a solution. We're coming to you from Shekhpura village in Gannaur block in Sonipat district. Behind me is a tractor, and attached to it is a very special implement. This is used to tackle the problem of parali that is persisting in North India at this point. We all know that North India is facing blazing fires. Smoke up in the atmosphere is clogging the atmosphere and is posing a health hazard to all of us. Not just you and me, but for the farmers living here too. So what is being done on ground? There's of course innovative solutions that we hear about. We hear about new machines that have been incorporated by these farmers. We also hear of decomposers that are being utilized. But we're presenting to you a report showcasing the practical use of these machines and how exactly they help tackle this problem. Behind me is a machine called a straw baler. Let's in fact interact with some of the farmers to gauge as to how exactly they deal with this problem. But first, let me take you through what exactly this does. If you watch rather carefully, the straw has been laid down in one particular line over here, and this happens throughout the field. They've already been cut, they've already been stacked in certain lines, and they have been placed so that this machine right over here, which is attached to a tractor, is able to collect the straw, process it and turn it into these bales. This is of course a rectangular bale, and if you watch rather closely, you will also be able to notice a little ribbon that is tied around this right over here. So this is one of the methods that is in fact used to reduce the adverse effects of parali in the area. But also taking a closer look as far as this is concerned, if you can look at the spokes over here and how exactly they carry forth this material, they pick it up, they push it inside this little area from which it is taken and then turned into those rectangular bales. Let's have a conversation with some of the farmers who are in fact present over here. Let's speak to them. जी, ये आपका मशीन है, आप बता सकते हैं कि ये क्या करता है exactly?
ये जो हमारी बेलिंग मशीन है, इसका काम जो फसल के अवशेष बच जाते हैं कंबाइन को काटने के बाद, उसकी गांठ बांधता है, पराली की गांठ बांधता है। और ये इसमें काफ़ी परेशानी थी किसान को, इसमें अवशेष बचने के बाद सरकार की तरफ से इसमें 50% का अनुदान मिलने के बाद किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और ये बेल की बिक्री भी होती है इसको बनाने के बाद। जी, आपने बोला है कि सब्सिडी में मिलती है। आपने कितने में इसको ख़रीदा है और सब्सिडी के बाद कितना फाइनल कॉस्ट था आपका? इसको 13 लाख रुपये का कॉस्ट है और 6 लाख रुपये सब्सिडी है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और आपने इसका लाभ क्या देखा है? आप कितने साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या लाभ देखा है आपने जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इसको 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, पर प्रति वर्ष इसमें 6 लाख रुपये के करीब इनकम हो जाती है खर्चा निकाल कर। जी, और कितने एकड़ ज़मीन आपने अब तक इस बेलर से अभी ठीक किए हैं, पराली को इनके बेल्स बनाए हैं? कितने एकड़ ज़मीन? 650 एकड़ ज़मीन की बेल हमने अभी तक बनाई इसके साथ, और काफ़ी अभी और भी काम है। जी, और आप हमारे इनफैक्ट दर्शकों को दिखा सकते हैं कि ये कैसा है इनका फाइनल बेल जो इस छोटे से चीज़ से निकलता है। आप उनको समझा सकते हैं वो सब क्या है उधर, ये सारे इम्प्लीमेंट समझा सकते हैं? हाँ, जो ये एरैक के बाद जो ये पराली जो इकट्ठी हुई है यहाँ से, ये पराली जो इकट्ठी हुई है यहाँ से, इसको ये बेलिंग मशीन के अंदर जाके और यहाँ इसको इकट्ठा करके बेल बनाई जाती है। और इसमें रस्सी रखी है, ये रस्सी यहाँ से चलते हुए नीडल जितना छोटा बंडल छोटा चाहिए हमने उसको यहाँ से बना के, और ऑटोमेटिक मशीन अपने आप नोटर वहाँ से काट देता है। इसको छोटा बंडल बना छोटा, बड़ा करना बड़ा बनाता है। अच्छा, तो आपका इसमें कोई सेटिंग है क्या? आप ये सेटिंग कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं, जो इसकी सेटिंग है छोटा बड़ा बंडल यहाँ से बनाते हैं। अच्छा, और आपको क्या लगता है कौन सा बंडल ज़्यादा एफिशिएंट है, या आप क्या सोच समझकर? 20 किलो का जो बंडल है वो काफ़ी ठीक है, लेबर को उठाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। 20 किलो वाला बंडल ठीक है। जी, और आपने बोला है कि आगे जाकर आप बेचते भी हैं, तो ये कहाँ बेचते हैं और उसका इस्तेमाल किस में होता है? ये रिफाइनरी में भी चला जाता है 190-200 रुपये कुंटल तक, और खुम्बी फार्म में भी कंपोस्ट के द्वारा भी इसको यूज़ करते हैं। और इसमें ये अपने जैसे कोयला बंद होने के बाद भी जलाने में काम आते हैं, बिजली बनाने में भी, किसी चीज़ को बॉयलर में काफ़ी प्रक्रिया में काम आती है। जी, और आप कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? पेट्रोल, डीजल? डीजल तेल से ट्रैक्टर चलते हैं, डीजल यूज़ करते हैं। और क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ये अच्छा है, अच्छी इनिशिएटिव ली है आपने कि आप इस मशीन की इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, काफ़ी इसको जैसे 5-6 लाख रुपए तक हमारे को साल में इसमें सीज़न में बच जाते हैं। और कुछ जैसे पर एकड़ का 1000 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है, ज़मींदार को मिलता है 1000 रुपये एकड़ का। काफ़ी ठीक है काम, जैसे अपने खेत शुद्ध हो जाते हैं और किसान को परेशानी नहीं आती इसको गेहूँ बिजाई करने में। All right, so there we've heard it from the farmer itself. And what is really interesting is the switch from manual cutting, which was originally done from sickles, to a more automated process. And this automation is not just as far as collecting the straw is concerned, but also ensuring that it is tied properly. If we can see here, there are ropes that are also kept that ensures that these bundles are created properly. This is a fully automated process. Modernization has in fact permeated as far as farming is also concerned and dealing with the menace that is parali. Farmers, of course, are looking forward to the rabi crop that they will sow rather soon, specifically wheat. They are preparing their soil for that. It does require quite a bit of time. Usually the crop is sown around mid-November. This is to ensure that it gains maximum benefits from the winter showers due to the western disturbances. But the menace of parali burning exists. It is something that we cannot deny. It requires a solution, and one of the solutions is right behind me. This is being incorporated by farmers. They've stated that the government has also given them a subsidy. Signing off from Gannor in Sonipat, Piyaman with camera person
Setu for NewsX. And my colleague Pia also spoke with Naveen Huda, Assistant Agriculture Engineer, Agriculture and Farmers Welfare Department, Sonipat. We leave you with this. Goodbye. Spoken to the farmers earlier. Let's also gauge a perspective from the officials. The farmers say that they sell this material. What do they do after that? ये बेचने के बाद क्या इसका यूज होता है? ये बेलर के द्वारा बेल बनाने के बाद किसान इनको फैक्ट्रियों में बेचते हैं, जहां पर बॉयलर्स में ईंधन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और आर्थिक रूप से धन के रूप में किसान को लाभ मिलता है। कोल पर जो है बैन लगाया हुआ है और कोल के ऑप्शन के रूप में इसका भली भांति प्रयोग किया जा रहा है। So it is an eco-friendly alternative to coal and other fossil fuels that are being used. Another benefit of ensuring that these bales are made. What about the the cattle that is here? Does this also serve as fodder for them? Yeah, yes. एग्जैक्टली ये फोडर के रूप में भी जो है बेचा जा रहा है और इसकी बड़ी अच्छी मांग है। हमारे ज़िले में जो है काफ़ी जो है बेल्स बनकर फोडर के लिए भी प्रयोग की जा रही हैं। Well, there, of course, you've heard the official, Mr. Naveen, speak about how this benefits the farmers, this benefits the environment, this benefits the health of all individuals in the region. And he's also appealed to farmers to switch to this technology that is, of course, being slowly but surely incorporated so that a sea change can take place as far as agriculture in this country is concerned to benefit your, mine and everyone's health. Signing off for NewsX, Pia Man and Akshit Gupta with camera person Setu. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.